Hello students. I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 9, that is lines and angles. Chapter number 9 and chapter name is lines and angles. Class, in this chapter we are going to study about lines and angles. Okay class. Now class see. Yes class. Let's start the chapter. Pair of angles and parallel lines are mostly used in construction work. Class इसमें यूज होती है, मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होती है, such as in construction of buildings, dams, etc. Some of them are given below. Class, parallel lines are critically important when making out road, pedestrian crossing, car parkings. Okay, जो फुटपाथ्स होते हैं क्लास. Okay, multi-story floors and rows of windows in high buildings need to turn in a parallel, otherwise looks and straight would be weak. क्या होता है क्लास, अदरवाइज वो क्या होंगे, वीक होंगे. नाउ 3, रेलवे ट्रैक्स आर जस्ट पैरेलल टू ईच अदर. क्या सी, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं. इफ दे वुड नॉट बी पैरेलल देन ट्रेन्स वुड बी डिरेल्ड. ओके क्लास, वो क्या होगी क्लास, वो अच्छे से उस पर चल नहीं पाएगी और वो हो जाएगी. ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कैन बी सीन इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ नीडल ऑफ अ क्लोक. नीडल जब यहाँ पर आती है वो अलग क्लोक एंगल बनाती है देन यहाँ पर देन दिस. ओके, so class, in class 6 we have learned about some basic geometrical concepts. हम basic geometrical concepts के बारे में पढ़ चुके हैं ना 6th class, like line segments, angle, ray and line. We have also learned about different types of angles and polygons. Okay, in this chapter we will learn more about them. Plus उनके बारे में हम और ज्यादा पढ़ेंगे इस chapter में. Plus line segment, it is the shorter distance between any two points. It has two endpoints. It cannot be extended in any direction. A line segment can be measured, so it has finite length. Class, उसकी कोई finite length होती है. Here AB is a line segment. It is denoted as A or B. Class, उसके certain measurement होता है एक line segment का. Okay class, हम उसको इसकी कोई finite length होती है. Okay class, हम उसको extend नहीं कर सकते. We cannot be extend in any direction. Now class, come on line. A line segment extended in both the direction becomes a line. Class, उसको हम दोनों directions में क्या कर सकते हैं, extend कर सकते हैं. A line has no endpoints. It can be extended endlessly in both the directions. Can we measure a line? No, we cannot. Okay, so we can say that a line has length that cannot be measured. Line segment is a part of a line. PQ is a line. It is denoted as P or Q line. Now ray, a line segment when extended to one direction only becomes ray. It has one initial point. It has no finite length. Here OP is the ray. It is denoted as OP plus C. ये ray का symbol होता है. It has O as initial point. It has O as its initial point. Understand class? Now angle class. Two rays having same initial point from an angle can also be formed when lines or line segments meet or intersect each other at a point. Class, line segment और intersect कर रहे हैं यहाँ पर. In figure A, line segment AB और BC meet. class, उनका क्या है, B पे वो meet हो रही है. to from plus angle क्या बनेंगे, ABC और CBA. Understand class? Now line segment AB and CD intersect at O from four angles: angle AOC, angle COB, angle BOD and angle AOD. Now class, come on types of angles class. Acute angle, an angle whose measurement is less than right angle is called an acute angle. Angle ABC and PQR. class, ये क्या है, acute angle है. Okay, जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो क्या होते हैं, acute angles होते हैं. क्लास, obtuse angle जिनके ग्रेटर देन होते हैं वो किससे, 90 डिग्री से, वो कौन से एंगल्स होते हैं, हमारे obtuse एंगल होते हैं. क्लास, नाउ राइट एंगल क्लास, राइट एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है. अंडरस्टैंड? नाउ स्ट्रेट एंगल क्लास, 180 डिग्री का जो हमारा एंगल होता है वो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है. ओके, नाउ जीरो एंगल, एन एंगल whose arms coincides with each other without making any rotation is called zero angle. उसको हम क्या कहते हैं क्लास, जीरो एंगल. नाउ क्लास, कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होता है अपना पूरा, हम कंप्लीट एंगल कहते हैं. नाउ क्लास, reflex angle, an angle whose measurement is more than 180 but less than 360. ज्यादा तो हो 180 से, बस less than कितना हो
360 से, सो वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा क्लास. अब नाउ कम ऑन related angle. Now class, angle which are related with some condition are called related angles. The following are types of relating angles. Class, complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree, वो क्या होंगे क्लास, complementary angles होंगे. An angle of 40 degree and other of 50. So class, ये क्या है, complementary of the each other. Now class, supplementary angles. Two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. The two angles whose sum is 180 degree, वो कहते हैं क्लास उसको supplementary of each other. So an angle of 120 is supplement of 60 degree angle. Now class, adjacent angles. Two angles are called adjacent angle if they have a common vertex, a common arm, non-common arm, or either side of common arm. Or we can say that adjacent angles have a common vertex. Class, उनके पास क्या होता है, common vertex होता है, common arm, but their interiors do not overlap, that is they have no common interior points. In the adjoining figure, angle AOB और एंगल AOC, क्लास ये क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है क्योंकि उनमें क्लास एक कॉमन आर्म है. अंडरस्टैंड हो, उनका जो पॉइंट है वो भी कॉमन है. अंडरस्टैंड, अ कॉमन वर्टेक्स O, कॉमन आर्म OA, नॉन कॉमन आर्म्स हैं OC और OB. Okay, opposite sides of the common arm, that is OA. Now class, short examples, come on. Are the following pairs of angles adjacent? Yes class, कौन कौन से हैं? Yes, angle A, AOB और AOC, AOB और AOC. Understand class? A common vertex O है उसमें और common arm भी है OA, नॉन कॉमन आर्म्स है OB और OC on opposite sides of OA. Now come on B. Angle AOB and angle BOC are not adjacent as they have a common vertex O, a common arm BO. BO है उनकी common arm. Understand class? Yes class. अब आते हैं, come on, linear pair. A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common arms are opposite rays. Non-common arms are opposite rays. In figure A, yes class, in figure A and figure B, AOC, angle AOC and angle AOB. AOB adjacent angle, but in figure A, the non-common arm OC or OB are opposite rays. So angle AOC जो क्लास ये एंगल है and AOB from a linear pair है क्लास, ये दोनों linear pairs है. You can see here, whereas in figure B, OB और OC are not opposite rays. क्लास ये opposite rays नहीं है. Okay, so in figure B, angle AOB और एंगल AOC do not form linear pair. जबकि इस वाले इसमें पेयर बन रहा है, बट यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा. So class, vertically opposite angles, when two lines intersect, then the angles having their arms in the opposite direction are called as vertically opposite angles. When two lines intersect vertically opposite, angles so formed are equal. तो class कौन से होंगे, equal होंगे. Now class, come on, example number 1 show that when two lines intersect, the vertically opposite angles so formed are equal. See, angle 1 and angle 2 from linear pair. Angle 1, angle 2. Now, so angle 2 and angle 3, angle 2 or angle 3 from a linear pair. So angle 1 plus 2, 180 degree class. Okay, or 2 plus 3 be 180 degree. Now by equating first and second, so class first 1 plus 2 or 2 plus 3. So similarly क्या होंगे class, equal होंगे. Understand? Come on. Example number 2, are the angles marks 1 and 2 adjacent? Adjacent. If they are not adjacent, then give the reason. Class, solution. Angle 1 and angle 2 are adjacent angles. Angle अब class B में देखते हैं, ये भी adjacent angles है. class C की common ये है, क्या है? Common जो उनकी रे जा रही है. Okay. Now 1 and 2 are not adjacent. Non-common arms, class non-common arms है यहाँ पे, ये दोनों adjacent नहीं है. On the same sides of the common arm OC. Okay, angle 1 and 2 are not adjacent. See,
आपको देखकर ही पता चल रहा होगा ये एडजेसेंट नहीं है। अंडरस्टैंड, कम ऑन। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द एंगल व्हिच इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ क्लास लेट द एंगल बी x हो गया, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा क्लास 2x। x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लास क्या होता है 90 डिग्री, तो 3x, तो क्लास x की वैल्यू क्या होगी 30। एग्जांपल नंबर 4, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द एंगल्स क्लास। सप्लीमेंट्री का क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। सम क्या होता है उनका 180 डिग्री, तो हमने उनको ऐड किया, दैट इज क्लास x इक्वल टू 36 डिग्री। तो 36 3s आर और 36 2s आर 108 और 72 डिग्री। नाउ क्लास कम ऑन एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्लास कॉम्प्लीमेंट के लिए हम उसको 90 में से माइनस कर देंगे, प्लस 38 डिग्री। क्लास ऐसे ही हम 55 को, नाउ क्लास 25 डिग्री। अंडरस्टैंड क्लास, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू योरसेल्फ। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। क्लास यहाँ पर क्या 105 है और हमारा जो सप्लीमेंट होता है क्या होता है 180, सो 175 डिग्री। अंडरस्टैंड क्लास। नाउ 180 माइनस 87 3, so class 17 minus 8, that is 9, so class 93 degree. Understand class, rest of the part do yourself. Come on, question number 3, identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. class अब हम इनको ऐड करके देख लेते हैं। क्लास उनका सम जो आएगा वही हम उसके अकॉर्डिंग उसको, क्लास ये क्या है सप्लीमेंट्री है। अंडरस्टैंड क्लास। नाउ ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। अंडरस्टैंड क्लास, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू योरसेल्फ। Come on, question number 4, an angle is greater than 45 degree. Greater than to class 45 degree. What about its complementary angle? Is it equal, less than or greater than 45 degree? Yes class, उसने पूछा या तो वो क्वेश्चन इक्वल होगा, लेस देन होगा और ग्रेटर होगा। तो क्लास कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो वी नो दैट 45 प्लस 45 90 डिग्री। तो क्लास क्या होगा वो इक्वल होगा यहाँ पर। अंडरस्टैंड क्लास। Yes, class. Come on, question number 5. If angle AOC and angle BOC are supplementary, find the value of x. So, class, find the value of x. So, class, 4x plus 2x is equal to 180. So, class, 6x is equal to 180 degree. X is equal to 30 degree. So, class, 30. तो 120 डिग्री बिकॉज 4 की मल्टीप्लाई हमने किससे किया 30, एंड यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, इज अगेन 60। अंडरस्टैंड क्लास। तो 4x x की वैल्यू हो गई यहाँ पर कितनी हो गई 120 डिग्री और यहाँ पर कितनी हो गई क्लास 60 डिग्री। ओके क्लास, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ क्लास रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डू योरसेल्फ। कम ऑन, pair of lines class. Intersecting lines, two lines are said to be intersecting if they have a point in common point. The common key point is called at their point of intersection. AB and CD are two intersecting lines and O is their point of intersection. Parallel lines, two lines are said to be parallel if they do not meet or intersect anywhere. That's parallel lines जो एक दूसरे से ना तो मीट हो ना तो वो जुड़े एक दूसरे से। ओके, प्लेन व्हेन एक्सटेंडेड उनको हम इन्फिनिटली हम उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके क्लास। नाउ डायरेक्शन इन शॉर्ट, डायरेक्शन और इन शॉर्ट we can say that two parallel lines do not have a point in common. Thus we draw two lines in a plane, then they are either parallel or intersecting. So class, come on, transversal. A line intersecting two or more given lines in a plane at distinct points is called an transversal. In figure A, P is a transversal. प्लस इसके ऊपर जो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, जिसके ऊपर हो रही है वो कौन सी लाइन होगी ट्रांसवर्सल। बट फिगर बी, P इज नॉट अ ट्रांसवर्सल। क्लास यहाँ पर ट्रांसवर्सल नहीं है वो, क्यों? बिकॉज इट इंटरसेक्ट टू लाइंस एट वन पॉइंट ओनली। क्लास वहां पर एक ही पॉइंट पर टू लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पर अलग अलग पॉइंट पर टू लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो क्लास वो हमारा ट्रांसवर्सल होगा। बट यहाँ पर जहां पर उनका सेम होगा, कॉमन होगा पॉइंट, वो हमारा ट्रांसवर्सल नहीं होगा। अंडरस्टैंड क्लास। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन टू लाइंस
Let L and M be two lines and P is a transversal intersecting the lines at A and B, then L, M and P make 8 lines, make 8 angles, and we name them as angle 1, angle 2, angle 3, 5, 6, 7, 8, and shown is figure. As shown in figure, the 8 angles mark class C. 1, 2, 3. Okay. Now, interior angles class. Angles whose arm include AB are called interior angles in above figure. So class, angle 3, angle 4, class जो अंदर है, एंगल 6, ये क्या है हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं. ओके. ना एक्सटीरियर जैसे कि क्लास बाहर की साइड जो एंगल्स हैं, 2 हो गया हम, एंगल 2, 1, 8, 7. ओके. Pairs of corresponding angles, two angles which have different vertices on the same side of transversal and have same corresponding position related to two line segments are called corresponding angles. Now class, pair of alternate interior angles, pair of angles having AB as one arm plus AB as one arm, another arm of each angle in the opposite side of the transversal, or angles which form Z. Plus जब किसकी शेप ले रहा है, Z की शेप ले रहा है with one arm as AB are called alternate interior angles. So the pair of alternate interior angle are angle C, angle 3, angle 4, angle 6. Okay. Pair of alternate exterior angle, a pair of angle in which one arm each of the angle is on opposite sides of the transversal and other arms are directed in opposite direction and do not include segment AB is called a pair of alternate exterior angles. So class, angle 2, 8, 1 are the pair of alternate exterior angles. Angles made by a transversal with two parallel lines. If transversal intersects two parallel lines, then each of the interior angles on the same side of the transversal is supplementary. That is, they add up to 180 degree. Class, किसमें add up कर देंगे हम 180 degree. Now class, come on, solve examples. Example number 1. If L parallel to M, then T is a transversal, find X. तो क्लास हम किसको फाइंड करना है, x को फाइंड करना है. सोल्यूशन, क्लास L पैरेलल M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, देन T क्या है क्लास, ट्रांसवर्सल है, दो लाइन जा रही है उसके ऊपर से. नाउ x इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर. Pair of alternate interior angles, we know that when two parallel lines are intersect by a transversal, then all parallels of alternate interiors are equal. तो क्लास क्या होते हैं, सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अंडरस्टैंड. Come on, example number 2. If L and M are two lines, they are not parallel and cut by a transversal. Is angle 1 is angle to angle 2? Is angle 1 is equal to angle 2? Class, नहीं, not equal. वो equal नहीं होंगे class, because since the line L and M are not parallel. Class, वो दोनों parallel, अगर वो parallel होती दोनों की तो class वो क्या होते, equal होते. यहाँ पर वो पैरेलल नहीं है. ओके. We know that when two non-parallel lines are intersecting by transversal, then none of the pair of alternate interior angles are equal. Example number 3. L and M are two parallel lines. Class, T is a transversal. Okay, find x की वैल्यू फाइंड करने. So class, क्या होगा अब यहाँ पे, we know that when two parallel lines are intersecting by a transversal, then pair of consecutive interior angles are supplementary. क्लास, वो क्या होते हैं, ये दोनों क्या कौन से एंगल्स होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सो क्लास, हम उसको 180 में कर देंगे. सो एक्स वैल्यू होगी 108, 110. कम ऑन, एग्जांपल नंबर 4. इन द गिवन फिगर L क्या है क्लास, पैरेलल है M के. फाइंड द अननोन एंगल्स. यस क्लास, सोल्यूशन इन द गिवन फिगर L पैरेलल है M के और T क्या है क्लास, ट्रांसवर्सल. एंगल 7 होगा 110. तो क्लास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में. जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. एंगल 7 भी होगा और क्लास एंगल 2 भी हमारा 110 डिग्री का होगा. और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. सो क्लास, ये भी 110 का होगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है क्योंकि. अब क्लास, हम यहाँ से अपने एंगल 1 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. तो क्या आ गया एंगल 1 की वैल्यू,
70 डिग्री। क्लास अब 1 जो है वही 3 होगा, सो क्लास ये भी 70 डिग्री होगा। वी हैव, अब क्लास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सो क्लास ये क्या हो गया 70 डिग्री, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, तो क्लास क्या हो गया 110 डिग्री। अंडरस्टैंड क्लास? कम ऑन, exercise 9.2, question number 1, if L is parallel to M, P is transversal। क्लास ये क्या है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू। इफ L is parallel to M, क्लास L है पैरेलल की, और ये क्या है क्लास, P हमारा ट्रांसवर्सल है। क्लास जब हमें पता होता है दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल, तो उसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो क्लास 1x plus 3x is equal to 180 डिग्री, तो क्लास 4x is equal to 180 डिग्री, x is equal to 4 4 64, 4 5 20, सो क्लास x की वैल्यू होगी 445 डिग्री। x की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। नाउ क्लास कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, इन द adjoining figure identify the following। क्लास a pair of corresponding angles, क्लास पेयर क्या होगा, अब हम बता सकते हैं एंगल 1 और एंगल 5 का, और एक और बन सकता है क्लास 2 और, ओके क्लास। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर, कम ऑन बी पार्ट, एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 7। नाउ एंगल 7 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो होगा एंगल 3, एंगल 3 क्लास। ओके क्लास, रेस्ट ऑफ द पार्ट डू योरसेल्फ। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, इफ एल पैरेलल है एम के, फाइंड द नोन एंगल्स। क्लास अगेन ये क्या है क्लास, एक दूसरे के पैरेलल है, तो अंदर का जो एंगल होगा इंटीरियर वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो क्लास x की वैल्यू होगी हमारी, x की वैल्यू होगी 115 डिग्री। नाउ क्लास अब ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल 115 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्लास क्या होगा 115 डिग्री ही होगा, और इसके साथ ये भी क्या होगा 115 डिग्री होगा। नाउ क्लास अब ये वाला 65 है, तो ये भी 65 होगा, अंडरस्टैंड क्लास, एंड देन ये भी 65 होगा, so they all are equal। understand class? Rest of the questions class do yourself now class, your chapter is completed, prepare it very well, and we will see you in next class. Thank you.